ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ As you all know, Barca drew with Benfica, and there's nothing to hide. There's nothing to hide. Our emotions were full of roller coaster ride in that match. Things were not great for us in terms of luck, but in terms of tactical approach, in terms of playing with compassion, in terms of attacking threat, we were like fully going up front with the best teams out there in Europe. The only thing we miss is clinicality, and that comes when players are clinical enough. But going on to our main points, 3 main points, we are fucked up. Literally, we are fucked up with 3 things: our financial situation, our injury situation, and a player situation. Injuries are fucking us up because Dembele was injured. He came on and you saw the impact he made on the match because उसके ऐसा प्लेयर ही नहीं था. बेनफिका के जितने प्लेयर मिला के या बारसा के जितने प्लेयर मिला लो, उन्होंने डेम्बेले के आने तक जितना प्ले बनाया था उसने, उस बंदे ने उस प्ले को वो जितने टाइम में खेला था उससे ज्यादा बना दिए. You saw the potential of him if he is injury free, and I am sure if he hit his peak, literally if he hit his peak when he is like not injured for 2 or more seasons, he could be potentially a Ballon d'Or winner. वो रोनाल्डो के जैसे हम बात करते हैं, injuries ruined his career. The same thing is happening with Dembele, and we are not even considering it. It's a shame because he has an immense potential, and लगता है कि उसका peak hit होएगा तो वो भी हो जाएगा. But getting on to the match, the starting lineup was as follows: Ter Stegen on goal, surprisingly longly started, and I don't know, man. I don't know. I fell in love with this game again after the 18-19 season. So shows how solid he is. बोल देना क्लास इज, उसके लिए क्लास टेम्पररी होता है, कभी कभी क्लास दिखाता है. फॉर्म इज परमानेंट, द बैड फॉर्म इज परमानेंट, द क्लास इज टेम्पररी. So then Gerrard Piqué and Ronaldo Araujo started with 4 midfielders being not midfielders. Jordi Alba started as a wing back, where De Jong and Busquets as holding midfielders, and then on the right wing back, surprisingly, Yusuf Demir. And we'll talk about Yusuf Demir later, but then we go on to the front 3. We'll not call it front 3, we'll call it 2-1, 3-4-2-1. The formation was 3-4-2-1. The 2 players up front were like midfield, and they were Gavi and Nico Gonzalez, and the connection was brilliant. Brilliant connection between them, brilliant plays between them, amount of balls they have given through, amount of passes they have given to each players, like it was immense. Their work rate is immense, and they have a great future as well. And up front we had Memphis Depay. I had to talk about Memphis Depay because I think Memphis Depay lacks some things, not everything, because approximately all of the points that Barca have right now in La Liga, 50% or 75% of them have come from Memphis Depay's goals or assists. ठीक है, so we'll consider it, but कुछ तो लैक करता है Memphis Depay, because I'll tell you, जब डेम्बेले के पास चांस था गोल मारने का, मेम्फिस डेपे के पास चांस था बॉल डालने का डेम्बेले को, he didn't. He took much longer than expected and the ball was gotten up from his feet. और एक चांस जहां पर मेम्फिस डेपे के पास चांस था कि वो गोल मारे, but he chose to go into the space और उसके साथ बॉल लॉस्ट हो गया. I don't know why defenders or players against Barcelona become a prime thing. भाई प्राइम पुयोल बन गए थे या प्राइम सर्जियो रामोस, whatever you call them, they were playing like the prime players out there. और ये याद रखना कि ओटामेंडी was like kicked out of Manchester City because they were hampering the other players play. मतलब उनकी वजह से सिटी अच्छा नहीं खेल रही थी, या वोटोंगिन भी उनकी वजह से उनकी टीम अच्छी नहीं खेल रही थी. They were thrown out of their club and they are doing absolutely well against Barca. भाई अगर आपको किसी को भी प्राइम टीम बनाना हो, play them against Barca. I request Max Allegri to come to Camp Nou, play against Barca and bring back their prime Juventus. Okay, so this is the thing guys, because मैं कुछ नहीं कह सकता कि हम कहाँ पर लैक किए. We didn't lack anything except finishing because we had our great gameplay, we had great tactical approach, we had great strength, we had great passion. What else could be the thing?
for us to drop points? Nothing भाई, the luck factor. You see डेमिर के पास बॉल था, डेमिर ने वो रॉबिन वाला कट इन करके जो शॉट लिया था, गोलकी को पास कर लिया था, मुझे लगा इट्स अ टॉप कॉर्नर, मुझे सही में लगा था इट्स अ टॉप कॉर्नर, बट डेस्टिनी had different plans and the thing was it hit the post. और उसके बाद रोनाल्डो अराओ को, जैसे कि हमें पता है, वो ऑफसाइड दे दिया गया, जो जॉर्डी अल्बा ने क्या बॉल डाला, जॉर्डी अल्बा सुंदर सुंदर बॉल एकदम, जो सीधा रोनाल्डो अराओ ने हेड कर दिया एज अ फिनिशर, एज अ नंबर 9. मुझे लगता है रोनाल्डो अराओ को नंबर 9 खिलाओ, जो भी है नहीं है मुझे पता नहीं, रोनाल्डो अराओ को नंबर 9 खिलाओ. दिस गाय कैन गिव यू एनीथिंग, दिस गाय कैन स्कोर बाइसिकल किक्स, दिस गाय कैन स्कोर सीजर किक्स, दिस गाय कैन स्कोर वॉलीज, दिस गाय कैन स्कोर हेडर्स. ही शुड बी प्लेड एज नंबर 9. ठीक है, वो अलग बात है कि अंशु फाटी आना बाकी है, ये सब चीजें, बट वो जो गोल ऑफसाइड हुआ उसके बाद तो पूरा लग गया. बट वी आर नाउ डिपेंडेंट ऑन आवरसेल्व्स एज वेल एज बेनिफिका. आवरसेल्व्स मतलब हम पर कैसे? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इफ बार्सा ड्रीव्स, बार्सा इज ऑन सेकेंड बट नीड्स टू विन द मैच अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक. और अगर टाई कर ली बार्सा ने बायर्न म्यूनिक के साथ, दे नीड टू, like Benfica needs to lose or draw against Dynamo Kiev, which is highly unlikely. So बार्सा के पास सिर्फ 5% चांस है आगे जाने का, सिर्फ 5%. तो यूरोपा लीग seems a big reality for now. जहां पर हम मैड्रिड को 5-0 हरा कर भी संतुष्ट नहीं होते थे, वहां पर आज हमें यूरोपा लीग से संतुष्ट होना पड़ सकता है. बट कुछ बोल नहीं सकते अगर डायनामो कीव ने बेनफिका के साथ ड्रॉ करा ली, अगर बार्सा जीत गई बायर्न के साथ, तो बहुत सारे व्हाट इफ्स है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. बट बिगेस्ट न्यूज इज अंशु फाटी विल नॉट बी अवेलेबल. क्लब उसे कितना भी कर ले, ठीक कर ले, बायर्न के सामने उसे खिलाना मतलब रिस्किंग हिम. और डेम्बेले स्टार्ट तो करेगा ही, मुझे लगता है अभी वो इंजरी फ्री हो चुका है फिलहाल, तो आगे का पता नहीं, वो इंजरी से गुजरते ही रहता है, तो आगे का पता कुछ नहीं हो सकता. So yes, this was the video guys, and if you like the video, please subscribe to the channel. We are heading to the 100 subs mark, and like the video, share this video as much as possible. And to all the Barcelona fans, if you are a Barca fan, please subscribe to the channel, because यहाँ पर बार्सिलोना के कंटेंट आते ही रहते हैं. And let me know in the comments down below, what do you think of the situation at Barcelona guys, because situation is very tense. हम यूरोपा लीग खेल सकते हैं, ऊपर से we have Bayern Munich in our next Champions League match. So what do you think about that? Let me know down in the comment below, and until the next video, goodbye.